A very refreshing morning to my dear students. Hope all of you are in good health, right? You must have started revising your topics now because UT2 is approaching, isn't it, students? Don't waste more time in watching TVs and videos. Go for learning now. This is the time to learn, to understand all the subjects. After a few days, you'll be having your UTs and you have to prepare nicely for that. Right? Now, today I'm going to change little bit the pattern of teaching. Some parents have told me to teach from the book. Right? So, today I will teach you the same content which is there in the book. It's Environmental Pollution Chapter 9. I'm going to start today. Please, it's a request. You have books with you. Open your books, and the way we are starting the chapter in the classes, right? We are starting in the classes, start in the same way. Right? Let's try this also. It's a good suggestion. It was a suggestion by few parents. I think it was a welcome step. Very nice. Now, today we will start environmental pollution. In this chapter, we will learn about pollution. Pollution is the mixing of harmful substances in air, water, land. We have read it in class 4 also. It's water pollution, it's noise pollution, it's air pollution, land pollution, and some steps to understand how to save our Mother Earth. Our Mother Earth is giving up number of resources, and we are greedy enough to think about ourselves only. हम ह्यूमंस बहुत लालची, हम अपने बारे में सोचते हैं. We don't think about the Mother Earth. So in this chapter we will learn how we can save our Mother Earth. First of all, we will start with pollution. The Earth is home to millions of living organisms. Nature has generously provided us many resources which has made our life more comfortable. But due to some human activities, the beauty and bounty of nature is being badly affected. हमारी अर्थ living organisms के लिए millions and millions of living organisms live over here on this earth, right? And nature has generously, evidently provided us. उसने हमको भरपूर दिया है बहुत सारे resources जिसकी वजह से हम comfortably रह सकते हैं. हवा है, पानी है, सूरज है, लाइट है. ये सब नेचर ने प्रोवाइड करा है. सूरज की रोशनी के लिए हम कोई सन को फीस नहीं देते हैं. आर वी पेइंग एनी बिल टू द सन? Isn't it? No, we are not paying anything. Are we paying anything to the atmosphere that it's providing us oxygen, it's providing us air? No, nothing at all. These are natural resources given by the Creator, right? But due to some human activities, the beauty and bounty of nature is being badly affected. लेकिन हम लोगों के कुछ गलतियों की वजह से हमारी धरती की सुंदरता और जो बाउंटी नेचर था प्रकृति का, हमें भरपूर चीज़ें देने का, गिविंग अस इन जेनरोसिटी, वो उससे बैडली इफेक्ट हो गया. द प्राइमरी फैक्टर्स कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सबसे पहला फैक्टर है जिससे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होगी, दैट इज increasing population. Second is industrialization, and third is urbanization. First, population increase हो रही है, right? ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा resources यूज होंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज बनेगी. Try to understand. अगर कम लोग होंगे तो resources भी कम यूज होंगे. ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा resources यूज होंगे. I can give you a simple example. If you are 4 इन अ फैमिली और आपके घर में और 4 आपके गेस्ट आने वाले हैं, तो आपको उनके लिए पूरा दोबारा यूज़ करना पड़ेगा और सारे रिसोर्सेज दोबारा करने पड़े. उनके लिए दोबारा खाना बनाना है, एक्स्ट्रा 4 पर्सन का खाना बनाना है, उनका बेडिंग रखना, उनका सब कुछ रखना है, राइट? इफ़ दे आर कमिंग टू लिव विथ यू, तो आपने उनके लिए रूम भी रखना है, आपने उनके लिए वॉशरूम भी रखना है, आपने उनके लिए सब कुछ रखना है. उसी तरह हम धरती पे आते जा रहे हैं लोग, करोड़ों लोग रह रहे हैं, राइट? रिसोर्सेज आर लेस और लोग आते जा रहे हैं, तो
घर बनाने के लिए प्लांट्स को काटा जाता है, जंगल खाली करे जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर भी तो बनाने हैं, रहेंगे कहाँ लोग। इंडस्ट्रीज बना रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में सामान बनेगा तभी तो हम तक आएगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल आई कैन गिव, योर बाल्टी है, मग है, कप्स है, सॉसर्स, all these small glasses, spoons, these are simple things which we need in our day-to-day life. For these things also factories and industries are there. We can't make a steel plate in the homes. No, not possible. And urbanization, अब टाउन्स बनने लगे हैं, सिटीज़ में लोग ज़्यादा रहने लगे हैं, इसलिए गांव धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. This Greater Noida was also 20 years back. It was also an agricultural land. यहाँ भी 20 years back, all full of these fields, crops and all that vegetation was going on. But now you can see around, only little portion is there which is having some crops and all that. Otherwise, everything is full of some commercial areas, residential areas, flats and all that, shops, isn't it? So this have affected this environment drastically. Now, any undesirable change in air, water or land which harms the environment is called pollution. कोई भी undesirable, desirable means जो हम चाहते हैं, undesirable means unwanted change. We don't want that change, but it happens. We are not in favor of that, but we have to go for that. अगर हवा में हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, डीजल गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ तो धुआं ही धुआं, पानी में हम सारा गार्बेज डालते हैं तो पोल्यूट करते हैं, लैंड में भी हम सारा कचरा डाल देते हैं, प्लास्टिक्स एंड ऑल दैट पोल्यूट करते हैं. वी आर आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग आवर रिसोर्सेज. और उसी को हम, जिससे हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं. स्मोक, पॉइजनस gases or waste material from factories are responsible for pollution. धुआं, gas और factories का waste material. If you have ever been to the Kalindi Kunj area, you can see the water. It's all filthy. Why? Due to factory waste. Right? Due to factory waste, whole Kalindi river is just, that is Yamuna river flowing over there. It's just in a filthy condition. Throughout the year, it's just that portion is in that condition. We can't even bear to see that. It's really in a pathetic condition. These are called pollutants. Pollution is of four main types. Sorry, this is not there. Pollution is of four main types. Right? 4 types हैं. I think you are aware about it. Air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. Repeat with me. Air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. So let's study them one by one. First of all, air pollution. Poisonous gases, smoke and particles mix with the air to make the air impure. Poisonous gases हैं, जो gases अच्छे नहीं होते हैं, फैक्ट्री से जो gases निकलते हैं, धुआं है, and dust particles हवा में मिलते हैं और हमारे हवा को इम्प्योर करते हैं, और इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल एक्टिविटीज. दोनों चीज़ों से एयर पोल्यूशन हो सकता है. नेचुरल इवेंट्स दैट पोल्यूट द एयर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर्स, पोलन एक्सप्लोजन, सैंडस्टॉर्म्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. अब नेचुरल इवेंट, जो नेचुरली जो हमारा हवा प्रदूषित होता है, किससे? फॉरेस्ट फायर्स. वो तो कोई जंगलों में आग लगाने नहीं जाता है, खुद ही फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं. पोलन एक्सप्लोजन, पोलन एक्सप्लोड, राइट. सैंडस्टॉर्म, आंधी तूफान आता है. एंड वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फूट जाता है. ये तो नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं है. ये हम में से, हमने मीन्स नॉट यू एंड मी. वी ह्यूमंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, राइट. ये तो नेचुरल चीज़ है, क्रिएटेड बाय नेचर. ह्यूमन एक्टिविटीज also result in air pollution. These include, sorry for these students because the book was in different condition, so I was not take the clear pic of this. These include emissions from industries,
burning of coal, petroleum products and wood, smoke from the factories. इनका पहला है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो गैस निकलता है, जो धुआं निकलता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल. हम कोयला जलाते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड वुड, पेट्रोल गाड़ियों में यूज होता है, और लकड़ी जलाते हैं. इन चीज़ों से भी धुआं होता है, राइट, जो पोल्यूट करते हैं हमारे हवा को. एंड स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, और हमारी गाड़ियों का, बसेस का, ट्रक्स का, उनका धुआं जो निकलता है उससे भी हमारी हवा प्रदूषित होती है. लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा पॉइजनस रहता है. यू मस्ट हैव सीन फॉग ऑन ए विंटर मॉर्निंग. जब विंटर्स आते हैं तो हम सुबह सुबह फॉग देखते हैं. फॉग, धुंध, पता है ना. यस, व्हेन दिस फॉग कंबाइंस विद स्मोक, जब हमें कभी कभी लगता है ये फॉग हम ब्रीद इन करते हैं, हमें लगता है धुआं सा अंदर लग रहा है. समझ नहीं आते ये धुंध में धुआं जैसा फीलिंग क्यों है. दैट वी फील लाइक इट स्मोक सा कुछ उसमें है, क्योंकि उस फॉग में स्मोक भी मिला होता है. एंड दैट टाइम वी कॉल इट स्मोक. एक होता है खाली धुंध, दैट इज फॉग, उसका कोई स्मेल नहीं होता है. इन कभी कभी हम ब्रीद इन करते हैं फॉगी डेज में, फील कुछ अंदर से लग रहा है. जब कुछ जल जाता है वो स्मेल वी कैन फील, right, and that is called smoke, because that time fog is combined with smoke which is in the atmosphere. This causes a serious problem as it does not allow the sunlight to reach the earth's surface by forming a dense and opaque layer. इस स्मोक से क्या होता है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सनलाइट को रोकता है ऊपर, ये हम तक सनलाइट को आने नहीं देता है. धुआं और फॉग, स्मोक बन के एक ऐसा लेयर बनाते हैं कि सन की रोशनी हम तक नहीं आती है, तभी हमें धुंध के दिनों में अंधेरा अंधेरा ही दिखता है. एक लेयर सी बनाते हैं, एक घनी लेयर बनाते हैं जिससे हमारे तक सन की लाइट नहीं आती है. ऑल लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स get affected by air pollution. सारे लैंड फॉर्म्स, सारी लाइफ फॉर्म्स, सारी लाइफ, चाहे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एयर पोल्यूशन से अफेक्टेड होते हैं. इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर लीड्स टू डिजीजेस एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. अगर हम ये पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं, आई कांट से अगर, बिकॉज वी हैव टू ब्रीथ. If we will close our nostrils and our mouth for few seconds, we will feel suffocated, isn't it? So we have to breathe. Whatever is there, we have to breathe. We can't stop breathing. So inhaling this polluted air leads to diseases and respiratory disorders, lung problem, asthma, bronchitis, other respiratory problems. Plants are unable to prepare their food properly in polluted air and thus their growth slows down. अगर एयर पोल्यूटेड है तो प्लांट्स की ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि उनको भी वो एयर बाता नहीं है. जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं पोल्यूटेड एयर से, वैसे ही प्लांट्स को भी पोल्यूटेड एयर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है. नाउ जस्ट सी व्हीकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज. ये व्हीकल का धुआं, ये फैक्ट्रीज का धुआं. चेक इट आउट. Right, students? Now this was all about your air pollution. So we have to, right now we are just having our masks. Why we are wearing masks? So that if there is any infection in the air or any person spits, coughs or sneezes, we should not get that germ. And that's most important, the request to wear your mask. In between this came to my mind, right? So wear mask whenever you go out. In your family it's okay, but whenever you are going out, you have to wear your mask. Water pollution. The waste and harmful chemicals from factories, when dumped into water bodies, pollute the water. This is right now what I was saying about Kalindi Kunj. When we put all the waste material in the river, in the water bodies, and all the factory waste having chemicals, right? They pollute the water, and that is called water pollution. And that due to this water pollution, this toxic chemical waste, many aquatic animals also die over there due to this, right? It not only makes the water impure, but also harms the plants and animals inhabiting the water body.
ये खाली पानी को गंदा नहीं करती है, लेकिन जो उसके अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स रहते हैं, यू नो ना, एक्वेटिक एनिमल्स. मेन एग्जाम्पल यू कैन सी द फिश, राइट. देयर आर नंबरलेस एक्वेटिक एनिमल्स, राइट. तो उनके लिए भी वो बहुत हार्मफुल होता है. नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज विच pollute the water are listed below. ड्रेनिंग सीवेज वेस्ट इनटू वाटर, हमारी नालियों का जो भी गंदा पानी होता है, हमारे घरों का पानी, फैक्ट्रीज का पानी, सारा उसमें चला जाता है दरिया में. डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट फ्रॉम फील्ड्स फ्लश इनटू वाटर बॉडीज. घरों का वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट, खेती बाड़ी का वेस्ट, उसको भी सारा इसी वाटर बॉडी में फ्लश किया जाता है. Okay, rest I will go for a next video. It's all in this video. I think there's some problem with this set, so I will take it out. So up to this it's clear. In my next video I will just continue with the same topic. Thank you, students.